here on this platform. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine and doing good. Coming up with the exercise 1.3, the topic is quadratic equation again, but this time the direct equation is not given to us. This time the equations that according to the topic we are discussing about such type of equations which can be reduced towards the quadratic equation to find the values for x. So there are 5 categories that we are going to solve. So the first category we have is such power which can be done in the power of a square. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास क्वेश्चंस में इंतहाई आसान तरीके से आपके लिए मेन बात यह है कि आपने मिडल वाली को ऑब्जर्व करना है, राइट। आप जैसे देखें, आपके पास है 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें x पावर 4 दैट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइन। इसमें आप x की पावर 4 को आप एक ऐसे में चेंज करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक बने। तो सबसे पहले यानी कि x पावर 4 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर। मेन फोकस आपका मिडिल टर्म के वेरिएबल पर होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे करेंगे कि पुट फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल ले लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, y की पावर x की पावर 4 का क्या मतलब होगा कि ये स्क्वायर का स्क्वायर बनेगी, यानी कि ये 2y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स आप इसमें यूं भी लिख सकते हैं देन, ठीक है, x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4 कैसे होगी, x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये y का स्क्वायर बन जाएगी। आप ये लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, फाइन। Now this is the quadratic equation in y. अब हम इसके ऊपर कल की तरह आप इसमें quadratic equation का वाला फार्मूला quadratic यूज कर सकते हैं एंड वॉट एवर, आप उसको जैसे मर्जी करें। अब इसमें देखें y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू 2, the value b we have is minus 11 and c we have is 5. if you are good enough in factorization तो आप इसे फैक्टराइज भी करके चेक कर सकते हैं, राइट। और अगर आप इसे फार्मूला यूज करना चाहें तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या आसान लगता है। आंसर दोनों तरह से क्या होगा, सेम आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक यूज करेंगे तब भी ठीक है, अगर आप इसमें फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे तब भी ठीक है, राइट। तो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास लाइक आई एम यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप देखें आंसर कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर हैज द वैल्यू माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस 4, a is 2, c is 5 divided by 2a means 2 into 2. So answer remains what, y is equal to minus minus plus 11 plus minus 11 11s are minus minus plus 11 11s are 121 minus 4 2s are 8 and 8 5s are 40 divided by 2 2s are 4. When you will simplify it, you are left as the answer 11 plus minus square root of 81 divided by 4. 81 square root gives you the answer, that is what, 9. स्प्लिट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, that is y is equal to 1 time 11 minus 9 over 4 and the other times y is equal to 11 plus 9 divided by 4. जब आप 11 minus 9 करेंगे आंसर आपके पास कितना आएगा, that is 11 minus 9 has the answer 2 divided by 4. कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1 by 2 और यहाँ पर आपके पास y का आंसर कितना आ जाएगा, it's 11 plus 9, how much it is, 20 divided by 4. So आपके पास आंसर आ जाएगा 4 5s are 20. Okay, now coming up with the situation, what happens over there, ठीक है। यहाँ पर we were not supposed to calculate the value for y. आप देखें हमारा क्वेश्चन y में नहीं था और क्वेश्चन was in terms of x. Okay, so next we are going to further solve it until we get the answer for x. Fine. तो लास्ट में हम इसको वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, the value for y is equal to x square. तो इसका मतलब ये है अगर y is equal to 1 by 2 है तो इसका मतलब है x square का आंसर कितना होगा हमारे पास 1 by 2 and y is equal to 5, तो इसका क्या मतलब है
x square is equal to 5. Okay, we were supposed to calculate the value for x. Now I have replaced it y with x. So x के ऊपर square है, square को cancel करने के लिए we have to take the square root. So taking square root on both sides, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? x is equal to, it's plus minus 1 over under root 2. On the same other lines आपके पास कितना आ जाएगा? that x square. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे it would be plus minus 5. So I have already explained you in the previous lesson that जितनी x की पावर होती है उतने ही आपके पास possible answer होते हैं. Like in quadratic we were having the 2 answers. Remember one thing, when I am having x raised to the power 4, that means that answers there should be the 4 answers. तो देखिए यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस के साथ 2 answers are here, प्लस माइनस के साथ 2 answers are there. So the solution set we are going to have that is equal to, it's plus minus 1 over under root 2 and plus minus under root of 5. Okay, on the same lines we are having the question number 2 boys. So we have 2x raised to the power 4 is equal to 9x square minus 4. The equation looks like that it can be converted into the quadratic equation, but first of all let me write it in the standard form. So when I will shift these values towards the left hand side, I am left as the equation, right? That is 2x raised to the power 4 minus 9x square plus 4, that is equal to 0. Okay, so now I am going to convert it. Again the substitution remains the same as I have explained in the question number 1. The situation is, again the square of a square will make the x raised to the power 4. So we will substitute, put y is equal to x square, then x raised to the power 4 is equal to x square whole square is equal to y square. Okay, अब आप इसमें जब चेंज करेंगे तो देखिए it's 2y square, it's minus 9y plus 4, that is equal to 0. Fine, now this is the quadratic equation in terms of y. So comparing, we have a is equal to 2, b में we have the coefficient that is minus 9, c we have that is equal to 4. The quadratic formula is y is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. If you want to factorize तो आप इसको factorize भी कर सकते हैं. I am again telling you. So what it would be minus into minus 9 plus minus b square is what? It's minus 9 square minus 4. A is 2, c is 4 divided by, it's 2a, 2 into 2. So minus minus plus 9 plus minus, it's 9 9s are 81 minus 4 2s are 8, 8 4s are 32 divided by 2 2s are 4. Okay, so next we are going to have that is 9 plus minus square root of 81 minus 32 will give you the answer 49 divided by 4. So we are left as the answer 9 plus minus 7 divided by 4. Split it, we are left as the answer one time 9 minus 7 over 4, and the other time that is y is equal to, it's 9 plus 7 divided by 4. So 9 minus 7, that is 2 by 4. Again I am left as the answer 1 by 2. On the other line we have 9 plus 7, that is 16 divided by 4. After cancellation we are left as the answer y is equal to 4. In the last, what I need to do, I need to add the answer in terms of x. Now this is the answer for y. At the last, again what we are supposed to do, we have to replace y is equal to x square. So we are left as y square, y is equal to 1 by 2. So I am left as x square is equal to 1 by 2, and the other value y is equal to 4 will be replaced with x square is equal to 4. Fine. Now what we are going to do, again I have to take the square root on both sides to cancel. So we are going to have x square is equal to square root of 1 by 2. Cancel करें. So जब आप इसका square root open करेंगे, it would be plus minus 1 over under root 2. The square root of 1 is 1. So that is why I have skipped over there after solving it. But square root of 2 is not a whole number.
so I'm just putting over on it. Fine. And the next one is x square is equal to square root of 4. Cancel them out and we are left as the answer plus minus 2. So plus minus 1 over under root 2 and plus minus 2, that is going to be the solution set and answer of this question. I hope that this question was on the same pattern as was the question number 1. Further queries, I hope that you will have resolved them.